जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे पंचम्या उमा संहिताया अथ पंचविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञ त्वत्सकाशान्मया मुने श्रीस्वभाव श्रुतप्रीत्या कालज्ञानं वदस्व मे। सनत्कुमार उवाच। इदमेव पुरा पृच्छत् पार्वती परमेश्वरं श्रुत्वा नानाकथां दिव्यां प्रसन्ना सुप्रणम्यतं। पार्वती उवाच। भगवन्तस्वप्रसादेन ज्ञातं मे सकलं मतं। यथार्चनं तु ते देव यो मन्त्रश्च यथाविधि। अद्यापि संशयस्त्वेक कालचक्रं प्रति प्रभो। मृत्युचिह्नं यथा देवी किं प्रमाणं तथायुष। सर्वं कथय मे नाथ यद्यहं तव वल्लभा। इति पृष्ठस्तया देव्या प्रत्युवाच महेश्वर। ईश्वरुवाच। सत्यं ते कथयिष्यामि शास्त्रं सर्वोत्तमं प्रिये। येन शास्त्रेण देवेशी नरे काल प्रबुध्यते। अहं पक्षं तथा मासं मृत्युं चायनवत्सरो स्थूलसूक्ष्मगतैश्विधैः बहिरन्तर्गतैस्तथा। तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि शृणु तत्त्वेन सुन्दरी। लोकानामुपकारार्थं वैराग्यार्थमुमेधुना अकस्मात् पाण्डुरं देहर्मूर्ध्वरागं समन्तत। तदा मृत्युं विजानीयात् षण्मासाभ्यन्तरे प्रिये। मुखं कर्णो तथा चिक्षुर्जिह्वास्तम्भो यदा भवेत् तदा मृत्युं विजानीयात् षण्मासाभ्यन्तरे प्रिये। रौरवानुगतं भद्रे ध्वनिं नाकर्णयेद्द्रुतं। षण्मासाभ्यन्तरे मृत्यु गतिव्य कालवेदिभिः। रविसोमाग्निसंयोगाद्य दोदुतं न पश्यति। कृष्णं सर्वं समस्तं च षण्मासं जीवितं तथा। वामहस्तो यदा देवी सप्ताहं स्पन्दते प्रिये। जीवितं तु तदा तस्य मासमेकं न संशय। उन्मीलयन्ति गात्राणि तालुकं शस्यते यदा। जीवितं तु तदा तस्य मासमेकं न संशय। नासा तु स्रवते यस्य त्रिदोषे पक्षजीवितं। वक्त्रं कण्ठं च शुष्येत षण्मासान्ते गतायुष। स्थूलजिह्वां भवेदस्य द्विजा क्लीदन्ति भामिनी। षण्मासाज्या यते मृत्यु शिवहस्तैरुपलक्षयेत्। अम्बुतैलधृतस्तं तु दर्पणे वरवर्णिनि। न पश्यति यदात्मानं विकृतं फलमेव च। षण्मासायुसविज्ञेय कालचक्रं विजानता। अन्यच्च शृणु देवीशि येन मृत्युर्विशुध्यते। शिरोहीनां यदा छायां स्वकीयामुपलक्षयेत्। अथवा छाययाहीनो मासमेकं न जीवति। आङ्गिकानि मयोक्तानि मृत्युचिह्नानि पार्वती। बाह्यस्थानि ब्रुवे भद्रे चिह्नानि शृणु सम्प्रतं। रश्मिहीनं यदा देवी भवेत्सो मार्कमण्डलं। दृश्यन्ते पाटलाकारं मासार्द्वेन विपद्यते। अरुन्धतीं महायानं बिन्दुलक्षणवर्जितम्। अदृष्टतारको योऽसो मासमेकं स जीवति। दृष्टे ग्रहे च दिङ्मोह
षण्मासाज्यायते ध्रुवम् उत्तथ्यं न ध्रुवं पश्येद्दिवारविमङ्गलम् रात्रो धनुर्यदा पश्येन् मध्याह्ने चोल्कपातनं वेष्टयेते गृध्रकार्केश्च षण्मासायुर्न संशय ऋषय स्वर्गपन्याश्च दृश्यन्ते नेव चाम्बरे षण्मासायुर्विजानीयात् तत्पुरुषै कालवेदिभिः अकस्माद्राहुणाग्रस्तं सूर्यं वा सोममेव च दिक्चक्रं भ्रान्तवत् पश्येत् षण्मासान् म्रियते स्फुटं नीलाभिर्मक्षिकामिश्र ह्यक्स्मादेष्टयते पुमान् मासमेकं हि तस्यायुर्ज्ञातव्यं परमार्थतः मूर्ध्नि काकपोतश्च शिरश्वाक्रम्य तिष्ठति शीघ्रं तु म्रियते जन्तुर्मासैकेन संशय एवं चारिष्टबद्धस्तु बाह्यस्थ समुदाहृत मानुषाणां हितार्थाय संक्षेपेण वदाम्यहं हस्तयोरुभयोर्देवी यथा कालं विजानते वामदक्षिणयोर्मध्ये कथ्यते यदुदाहृतम् एवं पक्षो स्थितो द्वौ समासात् सूरसुन्दरी शुचिर्भूत्वा स्मरन्देवं सुस्नातः संयतेन्द्रिय हस्तो प्रक्षाल्य दुग्धेन वक्रेण विमर्दयेत गन्धे पुष्पे करो कृत्वा मृगये च शुभाशुभं कनिष्ठामादित कृत्वा यावदण्डगुष्टकं प्रिये पर्वत्रयक्रमेणैव हस्तयोरुभयोरपि प्रतिपदादिदिन्यस्य तिथिप्रतिपदादित सम्पुटाकारहस्तो तु पूर्वदिङ्मुखसंस्थित स्मरेन्नवात्मकं मन्त्रं यावदष्टोत्तरं शतं निरीक्षयेत्ततो हस्तो प्रतिपर्वणि यत्नत तस्मिन् पर्वणि सा रेखा दृश्यते भृङ्गसन्निभा तत्तिथो हे मृतिर्ज्ञेया कृष्णे शुक्ले तथा प्रिये अधुना नादजं वक्ष्ये संक्षेपात्काललक्षणं गमागमं विदित्वा तु कर्म कुर्यात् शृणु प्रिये आत्मविज्ञानं शुश्रोणि वारं ज्ञात्वा तु यत्नत क्षणं त्रीटि लवं चैव निमेषं काष्ठकालिकं मुहूर्तकं त्वरो रात्रा पक्षमासर्तु वत्सरम् अव्यं युगं तथा कल्पं महाकल्पं तथैव च एवं सहर्ते काल परिपाट्या सदाशिव वामदक्षिणमध्ये तु पथित्रयमिदं स्मृतं दिनानि पञ्चचारभ्य पञ्चविंशदिनावधि वामाचारगतो नाद प्रमाणं कथितं तव भूतरन्ध्रं दिशश्चैव ध्वजश्च वरवर्णानि वामचारगतो नाद प्रमाणं कालवेदिन ऋतोर्विकारभूताश्च गुणस्तत्रैव भामिनि प्रमाणं दक्षिणं प्रोक्तं ज्ञातव्यं प्राणवेदिभिः भूतसंख्यया सदा प्राणान् वह्नन्ते च इडादय वर्षस्याभ्यन्तरे तस्य जीवितं हीन संशय दशदस्त्रप्रवाहेण यब्धमानं च मानं च जीवति
पंचदश प्रवाहेण ह्यब्दमेकं गतायुषं विंशतिन प्रवाहेण षण्मासं लक्षये तदा पंचविंशदिनमितं वहते वामनाडिका जीवितं तु तदा तस्य त्रिमासं हि गतायुष षड्विंशदिनमानेन मासद्वयमुदाह्यतं सप्तविंशदिनमितं वहते त्वत्यविश्रमा मासमेकं समाख्यातं जीवितं वामगोचरे एतत्प्रमाणं विज्ञेयं वामवायुप्रमाणत सव्येतरे दिनान्येव चत्वारश्वनुपूर्वश चतुर्स्थाने स्थिता देवी षोडशेता प्रकीर्तिता तेषां प्रमाणं वक्ष्यामि साम्प्रतं हि यथार्थतः षड्दिनान्यादितः कृत्वा संख्यायश्च यथाविधि एतदन्तर्गतं चैव वामरन्ध्रे प्रकाशितं षड्दिनानि यदारूढं द्विवर्षं स च जीवति मासानष्टो विजानीया द्विनान्यष्टो च तानि तु प्राणसप्तदशे चैव विद्विवर्षं न संशय सप्तमासान् विजानीया दिने षडर्भिर्न संशय अष्टदस्र प्रभेदेन द्विवर्ष हि स जीवति चतुर्मासा हि विज्ञेयाश्चतुर्विशादिनावधि यदा नवदिनं प्राणा वहन्त्येव त्रिमासिकं मासद्वयं च द्वे मासे दिनाद्वादश कीर्तिता पूर्ववत् कथिता ये तु कालं तेषा तु पूर्वकम् अवान्तरदिना ये तु तेन मासेन कथ्यते एकादश प्रवाहेण वर्षमेकं स जीवति मासानव तथा प्रोक्ता दिनान्यष्टमितान्यपि द्वादशेन प्रवाहेण वर्षमेकं स जीवति मासान् सप्तबीजानि यात्षड्स्रांश्वात्पुदाहरेत् नाडी यदा च वहति त्रयोदशदिनावधि संवत्सरं भवेत् तस्य चतुर्मासा प्रकीर्तिता चतुर्विंशदिनं शेषं जीवितं च न संशय प्राणवाहा यदा वामे चतुर्दशदिनानि तु संवत्सरं भवेत् तस्य मासा षट् च प्रकीर्तिता चतुर्विंशदिनान्येव जीवितं च न संशय पंचदश प्रवाहेण नवमासान् स जीवति चतुर्विंशदिनान्येव कथितं कालवेदिभिः षोडशाः प्रवाहेण दशमासान् स जीवति चतुर्विंशदिनाधिक्यं कथितं कालवेदिभिः सप्तदश प्रवाहेण नवमासैर्गतायुषम् अष्टादशदिनान्यत्र कथितं साधकेश्वरी वामचारं यदा देवी व्यष्टादशदिनावति जीवितं चाष्टमासं तु दस्राद्रादश कीर्तिता चतुर्विंशदिनान्यत्र निश्चयेनावधारय प्राणवाहो यदा देवी त्रयोविंशदिनावधि चत्वार कथिता मासा षड्दिनानि तथोत्तरे चतुर्विंश प्रवाहेण त्रिन्मासाश्च स जीवति दिनान्यत्र दशाष्टोस संहरत्येव चारत अवान्तरदिने यस्यु संक्षेपाते प्रकीर्तिता वामचार समाख्यातो दक्षिणं शृणु साम्प्रतम् अष्टाविंश प्रवाहेण तिथिमानेन जीवति प्रवाहेण दशाहेन तत्सस्थेन विपद्यते त्रिंशदसहस्रप्रवाहेण पञ्चाहेन विपद्यते एकत्रिंशदा देवी
वहते च निरन्तरं दिनत्रयं तदा तस्य जीवितं हीन संशय 32 प्राणसंख्याय च यदा हि वहते रवि तदा तु जीवितं तस्य द्विदिनं हीन संशय दक्षिणकथितः प्राणो मध्यस्थं कथयामि ते एकभागगतो वायु प्रवाहो मुखमण्डले गावमान प्रवाहेण दीनमेकं सजीवति चकमे तत्परासो हि पुरा विद्विरुदाहतम् एतत्ते कथितं देवी कालचक्रं गतायुष लोकानां च हितार्थाय किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। इति श्रीशिवमहापुराणे पंचम्यां उमासंहितायां कालज्ञानवर्णनं नाम 25 अध्यायः। जय गुरुजी।